Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will deal with another topic of class 11th biology. Yes, the name of the topic as आपने पहले ही देख लिया है is cell division. हम सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे. इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी. तो सबसे पहले लेट अस सी व्हाट डज द टर्म सेल डिवीजन मीन्स. प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग इनटू टू. एक ऐसा प्रोसेस जहां पे एक सेल डिवाइड होके दो सेल बनाएगा. This process in simple terms is known as cell division. ये जो सेल डिवीजन होता है, ये सेल डिवीजन दो स्टेप्स में होता है. We can see that there are two steps of cell division. कौन कौन से हैं? One is interphase और दूसरा है M phase. This M phase is the actual division phase. जहां पे एक्चुअली सेल डिवाइड हो रहा होता है. Now if we take the example of human cell, तो एक ह्यूमन सेल requires 24 hours to form new cell. मतलब 24 hours में one human cell divides into two new cells. अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस 24 आवर में से सिर्फ 1 घंटा वैसा होता है जहां पे एक्चुअल डिवीजन इज टेकिंग प्लेस. रेस्ट द 95% ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल इज डिवोटेड इन इंटरफेज. ये जो 1 आवर है, दिस 1 आवर इज ऑफ मेटाफेज और एम फेज. And this 95% is devoted to interphase. अभी interphase क्या है? Now interphase is the time when the cell prepares itself for division. भाई उसका सेल डिवीजन होना है, इसलिए सेल अपने आप को प्रिपेयर भी तो करेगा. That preparation time of the cell to undergo the process of cell division is called as interphase. और ये interphase कितने देर का होता है? It is the majority part of its life cycle, that is 95% of its life cycle is devoted for getting prepared for cell division. Now if we talk about cell division, तो जो सेल डिवीजन होता है ये 2 स्टेप प्रोसेस है. क्या क्या होगा सेल डिवीजन में? सेल डिवीजन में सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा सेल का, और सेल का न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा. न्यूक्लियस डिवाइड होने का मतलब है कि इसका क्रोमोसोमल मटेरियल या जो क्रोमोसोम्स है दे आर गेटिंग डिवाइडेड, राइट? So when we say that nuclear division is taking place, we use the term karyokinesis. Now let us divide the term and understand it. Karyo means nucleus and kinesis means to divide. जब nucleus divide होगा इसको हम क्या कहेंगे? Karyokinesis. Karyokinesis, and then the other form of division within the cell is cytokinesis. Let us again divide the term. Cyto means cytoplasm and kinesis means to divide. So when during cytokinesis, what is happening? The cytoplasm within the cell is getting divided. Now let us talk about interphase. इंटरफेज को सेल का रेस्टिंग पीरियड भी कहा जाता है. Why it is called as resting period? Because अगर हम विजुअली देखें तो we do not find any such activity which
is done by the cell. Cell as such कोई एक्टिविटी करता हुआ नहीं दिखता है बाहर से. So we say that cell उस समय रेस्ट पीरियड में है या रेस्टिंग कर रहा है. पर क्या वाकई में सेल रेस्ट कर रहा होता है? नो, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले ही आई हैव टोल्ड यू दैट इंटरफेज is the phase where cell is preparing itself for the division. जब वो prepare कर रहा है तो वो दो तरीके से preparations कर रहा है. First, the cell is growing. Cell grow हो रहा है, cell mature कर रहा है, and it is preparing again for division. And DNA replication हो रहा है. डीएनए अपने आप को डबल कर रहा है. जब तक डीएनए अपने आप को डबल नहीं करेगा, रेप्लिका नहीं बनाएगा. रेप्लिकेट मतलब अपनी ही कॉपी. जब तक वो अपने आप को डबल करके अपनी कॉपी नहीं बनाएगा, तब तक सेल डिवीजन नहीं हो सकता. बिकॉज डीएनए इज नथिंग एल्स बट इट इज द जेनेटिक मटीरियल. दिस जेनेटिक मटीरियल हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड in the new forming cells also. So in interphase, cell undergoes two processes. Now we proceed further. We will discuss about interphase in detail. Our interphase has been divided into three parts. What are those three parts? First is G1 phase, जिसको हम gap 1 कहते हैं. द अदर फेज इज एस फेज, जिसको हम सिंथेसिस फेज कहते हैं. एंड द लास्ट वन इज G2 फेज, जिसको हम गैप 2 फेज कहते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इन ऑल दीज फेजेस? लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट G1 फेज या गैप फेज. दिस इज द इनिशिएशन फेज. इनिशिएशन फेज मीन्स इट इज गोइंग टू स्टार्ट समथिंग. वो किसी चीज को इनिशिएट करता है. किसको इनिशिएट करेगा? द प्रॉपर डिवीजन ऑफ द सेल, द एक्चुअल डिवीजन, दैट इज माइटोसिस ऑफ द सेल. कि सेल अब तैयार है, द सेल इज रेडी एंड इट हैज टू अंडरगो डिवीजन, इट हैज टू अंडरगो माइटोसिस. कौन बताएगा इस बात को? It is taken care of by the initiation phase, or that is the G1 phase. We now move to the second phase, that is the S phase, जिसको synthesis phase भी कहते हैं. Synthesis means something is getting produced, कुछ बन रहा है. Something is getting synthesized. क्या बन रहा है? क्या प्रोड्यूस हो रहा है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज टेकिंग प्लेस. हमने बताया था आपको कि डीएनए को अपने आप को डबल करना पड़ेगा. सो दिस डबलिंग ऑफ द डीएनए बिफोर सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन एस फेज. दैट इज एस फेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर the replication of DNA and takes care that DNA is distributed into new forming cells. The next part is G2 phase, जिसको हम gap 2 phase भी कहते हैं. Now here also synthesis takes place. क्या है कि synthesis हो रही है? What is being produced? प्रोटीन की synthesis हो रही है. Protein is produced in this stage. So whenever we talk about protein, we correlate protein with growth. That means this is the stage when the cell is undergoing the process of growth. Cell में growth हो रहा है. अच्छा, कुछ cells body के, especially if we are talking about human body, there are few cells in human body which after going to G1 phase, they do not enter into S phase and G2 phase. They straight away from G1 phase, they move to G0 phase. ये कौन सा स्टेज है?
ये वो स्टेज होगा सेल का. फॉर एग्जाम्पल वी हैव हार्ट सेल ओवर हियर, जो डिवाइड नहीं करते, जो वैसे के वैसे ही बने रहेंगे बॉडी में. They do not divide, they do not undergo the process of further division. वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, silent phases में बने रहेंगे. But whenever it is required by the body, for example, there is cell death, the cell dies, or there is a case of injury, तो ऐसे cases में क्या होंगे, तब ये जो सेल्स हैं जो कि G0 स्टेज में पहुंच गए हैं, दे विल नाउ एक्टिवेट एंड दे विल ऑल्सो अंडरगो these steps of division, right? So here we come to the end of what cell division is. This is not what the cell is dividing, but it is how the cell undergoes the process of division. Today I conclude my video here itself, and I believe and I have faith that this video will help you to understand the concept of cell division in a better way, in an easier method, that before actual division, how the cell enters into the process of division. Now, I would request you all that if somewhere you find my videos to be of your help, then do hit the like button, hit the subscribe option, and if you feel that my videos would be beneficial for your friends also, then do share these videos. Also, as I always say, that sharing is caring. We are sharing knowledge here. हम अपनी knowledge जितनी share करेंगे, हमारी knowledge उतनी ही बढ़ेगी. So, happy sharing, happy subscribing, and happy studies. Stay happy.